And in the meantime, there's a short poll actually I wanted to do, but I should have waited. Maybe it's because not enough people have joined. But nevertheless, those who joined, if you can answer. Yeah, I think we'll start, and hopefully Disha will join because people have joined and we don't want them to be just hanging. So welcome everyone. I'm Yasmin Fatima, the founder of Foundation for Equal Citizenship. And we started this series of webinars a few months ago, the first being on women, focusing on young women, covering issues like women in workspaces, women in political movements, social movements, technology, discussing with them what their journeys were, what are some of the challenges, what are some of the recommendations for future for women to be more be able to participate more, things like that. Then on a second series, as you know, the topic today, we started on climate change because it's something that impacts everyone, particularly the youth. Seem to, be more concerned, rightly so, because of the future ahead for them. So the first one was kind of, just beginning with an overview of what climate change, not really like a definition of what climate change is, but, the situation we are in today, and covering specifically about India, how this is also a climate justice movement, because there are certain, communities that are impacted more. So there is the inequality that kind of, is quite jarring and obvious. And then the second one was more about the history of climate movements in India and also policies that the central government, the state governments have come up with over the years. What are some of the critique around that? And so the third one, which is what we are participating in today, is going to be about a little bit about some, the whole energy situation, because carbon or fossil fuel burning is considered one of the major factors for climate change. Right. And so talking specifically about India, it is a global issue, so you can't really pinpoint one particular country, but nevertheless, talking a little bit about that. And then some of the, solutions that participants
kind of, think are necessary for India in particular moving forward. And more than that, them talking about, the communities they represent or their movements that they represent, collectives, what work they are doing and how others could get involved. And also like FFEC as an organization is also interested in seeing, are there some actions, local actions that we could get involved with, or other actions which may not necessarily be local, but that kind of fit in with our objectives of social justice, addressing income inequality, marginalized communities, etc. So that's kind of, the objective of this particular webinar, which is in this series is the final one. We can, of course, have more webinars in the future on topics that, we may have come across during these sessions. So with that, I want to introduce our speakers. Maybe Yash, you could start first because I'm glad to see Disha has joined, but let's just give her a few minutes. But if you can start with your introduction, Yash. Sure. Thanks so much. I am audible? Yes. Yeah. So hi all, this is Yash Marva. I'm joining currently from Jaipur, but I'm from Bombay. And I co-run this collective called Let India Breathe, which is a climate communications collective. So we just try to ensure that there's a lot of jargon in the climate communication space. So we just try to ensure that we simplify the language. That's just what we do. I started my environmental activism with the Save RA movement in a way. So it sort of goes back to late 2016. And we started Let India Breathe about 4 years ago. It was March 2018. So I hope that's all. And I mean, that's enough. And do let me know if I need to just quickly say this in Hindi also. But yeah. Yeah, good point. We want to keep it inclusive. So, it's up to the speakers what language they want to speak in. And we can speak in both languages. I will try to also remember that. Sometimes I forget. But hopefully most of the audience can understand both languages. But yeah, I just wanted to let everyone know that. Disha, if you could introduce yourself and also maybe if you could have your camera on. Yeah. Hi everyone. I'm Disha. I'm from Fridays for Future India. I'm a climate activist with them. We started FF, I think, back in 2019 when the global climate strike took off, and we realized that it's very pertinent for young people to be a part of this conversation. And we're currently present in a bunch of like over 30 cities, towns, villages in Bangalore. And we've been working on various things, both on ground as well as online. And I'm very happy to be here. Should I pass it on? I don't speak Hindi at all. No, that's okay. Yeah, Anubhav. Anubhav, can you hear? हेलो या तो मैं तो हिंदी में बोलने वाला हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त और जुड़ने वाले हैं जो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो सभी को नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अनुभव और मैं बेस्ड बस्तर में हूँ, छत्तीसगढ़ में। आप सभी सुनते होंगे बस्तर के बारे में, कई सारे चीज़ें जो यहाँ पे होती रही है और हो रही है। बेसिकली मैं यहाँ एट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो कि बेंगलोर की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे लोगों के पर्यावरण के हक को दिलाने, साथ में फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन करके लोगों को फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी ज़्यादा और पर्यावरण को उनके हाथ में सौंपने की पूरी प्रक्रिया में मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। और लगातार पूरे 7 जिलों में, जो कि ट्राइबल एरिया है, और मैं भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो उनके साथ ही जुड़ के मैं पर्यावरण को बचाने और लोगों की आजीविका को मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ।
आपसे तो और हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि पिछले जो वेबिनार्स थे उसमें ये मुद्दा काफ़ी बार उठा के ये पूरा जो मूवमेंट है कैसे बहुत अर्बन यूथ का मूवमेंट ऐसे हो गया है, मीडिया में ऐसे ही लगता है, लेकिन असलियत में शायद और जगहों, बस्तर जैसी जगह में एक तरह से एक संघर्ष चल ही रहा है बहुत अरसे से, जो शायद क्लाइमेट चेंज मूवमेंट ना कहलाया हो, बट जो भी है इश्यूज जिसकी वजह से शायद इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर एक संघर्ष लगातार चल ही रहा है। तो हम जरूर सुनेंगे उसके बारे में आपसे। Before that, so this is for all of you. Since we did not really discuss much about about India's energy options right now, and how that may be impacting climate change, I wanted all of you speakers to talk a little bit about that. This is not an academic discussion, but like just what your opinions are given the situation that we are in today. I mean, definitely compared to some years ago, it seems like the global world, even the leaders, at least like when they speak, seem to be kind of serious about this issue. So obviously, carbon burning, fossil fuel burning plays an important role in this crisis. And so if you could like talk a little bit about what India's current situation around energy is, and that also goes to some of mining and stuff like that, where there often is resistance from the local community. Any of you who wants to start with that? Who wants to go first? मेरे ख्याल में ये जरा बस्तर से हमें ज्यादा पता चले तो बेहतर रहेगा। अनुभव भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, तो अनुभव आप ही बताइए। जी जी बिल्कुल। तो सभी को फिर से जोहार और नमस्कार। तो बेसिकली मैं कुछ अलग अलग तरीके से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। बेसिकली मैं इन्वायरमेंटल जस्टिस और उसमें कैसे सोशल जस्टिस जुड़ा हुआ है पूरा इन्वायरमेंट के इश्यूज पे। इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि यूनियन का जो बजट है जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो बना है वो 3030 करोड़ का जो पूरा बजट है, उसमें आप देखेंगे कि एलोकेशन जहाँ जहाँ पे हुई है, पूरे एलोकेशन का एक बड़ा पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में जा रहा है, जिसमें सोलर एनर्जी और कई तरीके की चीज बनने पे जा रहे हैं। तो वही कि मतलब कहीं ना कहीं ये जितने भी बड़े जो बजट है वो सीधा जाके कोई ना कोई कंपनी या कॉर्पोरेट के ही हाथ में जा रही है कि अब वो सोलर टाइप के कुछ टेक्निक्स बनाएंगे और उसको वो प्रमोट करेंगे। तो जो लोगों की हक की बात है, लोगों को जो जिम्मेदारी की बात है, लोगों को जो जागरूक करने की बात है, उस तरीके की चीजों के लिए बिल्कुल भी फंड दिख नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ मतलब अब पर्यावरण बचाना है तो भी वो कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट घरानों को ही सौंपने की पूरी बात इसमें पूरा दिख रही है अभी जो यूनियन बजट में आई है। ये तो खैर एक हिस्सा है कि कॉर्पोरेट हर जगह एक हावी हो रहा है, चाहे वो पर्यावरण का बात हो या फिर वो आजीविका का बात हो या फिर किसी भी तरीके की बात हो जो आप सभी देख पा रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में मैं थोड़ा उसको जोड़ते हुए मैं आगे बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में जो स्थिति बनी हुई है कि अभी देख सकते हैं कि हसदेव अरण्य आप सभी सुने होंगे कि जो कि नोगो एरिया था, जहाँ पे सरकार ने 2009 में नोटिफिकेशन जारी किया था कि वो सबसे डेंस फॉरेस्ट है और देश के बीचों बीच है, जहाँ से सारे जितने भी बायोडाइवर्सिटी को बचाने का और जंगलों को बचाने का जिम्मेदारी सरकार ने खुद ली थी 2009 में। अभी आप जाके देखिए कि हसदेव अरण्य की 40 से 50 गांव की जो विस्थापन की स्थिति आ गई है, जहाँ पे पर्यावरण बचाने के लिए सरकार कमिट की थी, वहां पे अब विस्थापन की स्थिति आ गई और कोल के खनन के लिए वहां पे पूरे जंगलों को काटा जा रहा है, वहां के पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। और ये पूरी चीजें जो है सीधे तरीके से बोला जा सकता है कि सरकारों की जो कॉर्पोरेट घरानों के सौंपने के लिए ये आप देखिए कि कुछ साल पहले वहां पे अच्छी खासी फॉरेस्ट थी, फिर कोल के लिए फिर आगे सरकार ने फिर धीरे से कदम बढ़ाया, पहले फेज की खनन चालू हुई, जब दूसरे फेज में जब गए तो अडानी को फिर वहां पे मिला
कोयले के खनन के लिए। और धीरे धीरे वहाँ पे जो है अब खनन की रफ्तार इतनी आगे तेज बढ़ गई है कि अब वहाँ के लोगों की जो आजीविका है, लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं है, लोगों की संस्कृति है, आदिवासियों की जो जिंदगी जीने की तरीके हैं, वो सब चीज को वो सब चीज को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ रही है, जो खनन जो होने वाली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी थोड़ा बनी हुई है जो मेन स्ट्रीम एक्टिविज्म में भी, कि पर्यावरण का प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ शहरों में और हवा के रूप में और पानी के रूप में तक जो सीमित करके रखे हैं, ये कहीं ना कहीं एक गांव तक जो पहुंच रही है, जो रूरल इंडिया तक पहुंच रही है, आदिवासी क्षेत्रों तक जो पहुंच रही है विकास के नाम पे, ये एक तो आजीविका को भी खराब कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात की ये सीधे तरीके से पर्यावरण का जो मसले है, जो क्लाइमेट का मसला है, वो पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर रही है। तो हसदेव अरण्य को आप देख सकते हैं एक बड़ी एग्जाम्पल के रूप में। इसी तरीके से आप और भी जो खनन से जो पर्यावरण की प्रदूषण बढ़ रही है, उसको भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि रावघाट का एक माइन है जो कि मेरे ख्याल से देश के अंदर में जो सबसे बड़ी आयरन ओर की माइनिंग स्थापित होने जा रही है छत्तीसगढ़ में। वहां भी आप देखिए कि पूरे जो कानून है, एक तो पर्यावरण अपने आप में एक बड़ी मसले है, एक बड़ी ताकत है जिससे पूरी दुनिया टिकी हुई है। इस तरीके का कानून को तोड़ते हुए जब जब डेवलपमेंट घुसती है, तब एक नया जो चीज है वो चीज सामने आती है। जैसे कि रावघाट का भी देखिए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो एक्ट है, कि कोई भी माइनिंग आने के पूर्व वहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रोसेस अच्छी तरीके से होनी चाहिए, लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोग क्या चाहते हैं उसकी बात सुननी चाहिए, लोगों को पर्यावरण से क्या नुकसान पहुंचेंगे, ना कि सिर्फ हवा और पॉल्यूशन के रूप में, इवन जो उनके आजीविका पे क्या असर पड़ेंगे, उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे क्या असर पड़ेंगे, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज पे क्या असर पड़ेंगे, इस पे सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करें। और जहाँ पे खनन होने हैं वहाँ पे ग्राम सभाओं से आप उनके निर्णय का आप स्वागत करें। लेकिन आप देखिए कि रावघाट में जो जितने भी खनन हो रहे हैं, वहाँ पे उनके जो 56 कंडीशन के साथ जो उनके इन्वायरमेंट क्लियरेंस पास हुए थे, आज एक भी जो कंडीशन है उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे कि पहली बार जब बात हुई कि पूरे ट्रेन से जो भी लोहा होगा उसको लाने ले जाने की काम होगी। अब आगे जब वो बढ़ गई, तो अब वो ट्रेन हम आगे एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, अब हमको अब हमको ट्रक से करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके के कंडीशंस, मतलब पर्यावरण को आप इतना आसान बना दिए हैं कि पर्यावरण के मुद्दों के कि आप आसानी से उसको तोड़ते हुए आप अपने मनमर्जी कुछ भी कर सकते हैं। तो यही एक उदाहरण है सबसे बड़ा कि जो ट्रेन से वो होने वाली जो माइनिंग थी, अब ट्रकों से होने वाली है। वहाँ रोड नहीं है, ना किसी तरीके के कुछ साधन है, नहीं वहाँ के लोगों को पता है सही से कि वहाँ पे रोड से माइनिंग हो सकती है, वहाँ की आजीविका आसपास के जंगलों पे टिकी है। बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं जो सीधे तरीके से ये अभी हमारे देश में, और खासकर ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, ये सब जगहों पे और ही माइनिंग के रूप में ये आगे बढ़ रही है। तीसरा उदाहरण के रूप में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो नॉर्थ में, वहां भी सेम यही है कि नंदराज का जो पहाड़ है, जहाँ पे अभी 40,000 से ज्यादा आदिवासियों ने आंदोलन किया था छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नंदराज के पहाड़ में जो भी अडानी को देने की बात हुई थी आयरन ओर के लिए, वहां भी सेम यही हुआ कि लोगों ने आंदोलन किए। लोगों ने कई किलोमीटर आंदोलन कर करके, पैदल मार्च कर करके लोगों ने अपना अपना पर्यावरण का हक जताया, अपने वन अधिकार के चीज मांगे, अपने आजीविका की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है। आजीविका मतलब एक तो पर्यावरण का भी सुनने वाली नहीं है कि आपके पर्यावरण को ठीक करने के लिए भी वो कुछ करने वाली नहीं है, ना ही आपके आजीविका को कुछ ठीक करने वाली नहीं है। तो इस तरीके की जो चीजें दिख रही है, और जो कानून बने हुए हैं, मैं बार बार एक चीज को ही रिपीट करता हूँ कि जो जितने भी कानून बने हैं, खनन की पूर्व क्लियरेंस के लिए कानून बने हैं, कई कानून बने हैं आजीविका को ठीक ठाक करने के लिए कानून बने हैं, जिसमें भी पर्यावरण की कुछ बात हुई है। आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट देख सकते हैं, ये भी एक है जो सीधा कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके के जो भी कानून बने हैं उसको सीधा मतलब बाईपास करते हुए आप एक खनन या फिर आप वो डेवलपमेंट के नाम पे एक डेफिनेशन, नया डेफिनेशन देने के चक्कर में आप उसको पूरा तोड़ रहे हैं और लोगों की जिंदगी पूरा बर्बाद कर रहे हैं।
तो ये सोच था कि पर्यावरण का मसला सिर्फ और सिर्फ जो शहर में रहने वाले, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों तक का ही मसला नहीं रह गया है। ये पूरा मसला वो गांव तक पहुंच गया है, जहाँ पे शुद्ध हवाएं थी, अच्छे पानी थे, लोगों की आजीविका बहुत अच्छी थी, पारंपरिक खेती होती थी, जहाँ पे पारंपरिक बीजों को, जो ट्रेडिशनल सीड्स है, उनको कंजर्वेशन का था, उनको बचाने का था। तो कई ऐसे जो चीजें हैं वो सिर्फ बर्बाद ही होते जा रही है। तो इसको मेरे ख्याल से जो इंटीग्रेट करने का जो मसला है कि पर्यावरण से एक आगे बढ़ के हम जो पर्यावरण को बचाने के लिए लगे हुए जो जन आंदोलन है, जो आदिवासी समाज है, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे आंदोलन करते आ रहे हैं, ऐसे भी संगठनों को आज हमको समर्थन देने की आवश्यकता है। उनको भी उनके हाथ थामने की आवश्यकता है, ताकि उनके आंदोलन में और मजबूती आ सके। और जो पर्यावरण के मुद्दे हैं जो लोग उठा रहे हैं, उन पे हमारा थोड़ा एक सहयोग भी बन सके, और ये इंटीग्रेट हम कर सके कि किस तरीके से सिर्फ पर्यावरण का मसला शहरों तक नहीं, गांव तक है, और ये आजीविका का भी मसला है और उनकी जिंदगी का भी मसला है। तब जाके ये जो विचार है, जो कॉर्पोरेट को ही अब पूरे पर्यावरण से ठीक करने के मुद्दे को भी जो कॉर्पोरेट को सौंप रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं समुदाय उस चीज को अपने हाथ में ले सके, जो कि सारे कानून में ही आप देख सकते हैं कि समुदाय को पहला ही भूमिका दे चुका है कि वो अपने पर्यावरण को सुधार कर सके। और हर जगह में देख सकते हैं, चाहे वो EIA देखिए, चाहे EC देखिए, FC देखिए, जो भी है, आपको ग्राम सभाओं और लोगों को ही ये सब चीज मिली हुई है। तो मैं आगे और जोड़ सकता हूँ, बट मैं चाहूंगा कि आगे जिस तरीके के भी सवाल हो तो फिर उसमें जी जरूर। हाँ, so Disha, Yash, can you talk a little bit about the energy landscape in India today? Yes, there is some talk, at least, like about moving towards clean energy. At the same time, there is also this conflict with the West or the developed countries about and understandably so, that this is a problem created more by the industrialized countries. And so India, why should a country like India bear the brunt of it? Or that, India should be paid to kind of move towards more clean energy. So first, if you can talk a little bit about the current landscape, of the energy, usage and production that India, the state that India is in today. And then like moving forward, what are, some of the options? And then we'll come to, the discussion about for the urban people, it becomes, development. India needs to develop, right? And so it becomes more about that without kind of thinking of the impact on the indigenous people, or even the, the forests, which are very considered, very important for the future. If we want to do address anything, whether it's the Amazon or it's the forests in India. So if one of you could like talk about this. Idisha, maybe you can go first. Yeah, sure. So I think even today, I think especially today, we're still highly dependent on coal for our energy needs, but more so than us, there are tens of thousands of people who are dependent on coal for livelihoods. And Land Conflict Watch did an extensive report of just how many people are reliant on coal for, just surviving from day to day. So while it has deep repercussions to the environmental as well as human rights repercussions to people who live around coal mines, there's another sector who also live there that are dependent on coal just to continue their survival. And I think that is something we need to consider. And I know we like to say, oh, phase out coal immediately. But the truth is, it's simply not possible for India to phase out coal immediately, because there are lives that where we need to have a just transition for them, where we need to
provide them with alternatives for them to go on with their livelihoods, provide alternative job opportunities, provide them training where they can take up new jobs. And in the long run, which will also be good for their health, because working in a coal mine isn't very conducive to anyone's own body or the environment they live in. So I think India does have a requirement to phase away from coal and fossil fuels in the long run, but the truth is that it is going to take years. We have to stop, fueling the same fossil fuel based things, but it's not going to be overnight. It's going to take time to work on that. But the truth is that we aren't even looking at that as an option. Sure, we say that in agenda, and if we go to the union budget, I don't think it was mentioned in the union budget at all, but at least at COP, we did mention it. We, instead of saying phase out, we said phase down, which wasn't even defined properly as to what that means. But also just the fact that we don't know what that means, and we aren't even working on phasing down our reliance on fossil fuel is concerning. And also another thing to note is that we haven't spent a large amount of money on research for alternatives, because as India, we have different sort of resources that will work differently in different areas of India, because we don't all have the same terrain. We have very different terrains. Like I'm from the south, we have a lot of reliance from the ocean. Maybe that can be used in ways that's not detrimental to the ocean or us. And we can always use solar energy, but these alternatives haven't been explored to an extent where we can determine if this is something we can use to generate a large chunk of energy for a long time. And I think it's important for us to be putting money into research about alternatives, what would work differently across India, and also about how we're going to accommodate people who are dependent on fossil fuels for their jobs. And because it's not something we can talk about when you're talking about phasing out coal or phasing out any fossil fuel. There are workers whose lives are on the line. Yeah, absolutely. Yash, what are your thoughts? Yeah, thanks for this amazing conversation, Anubhav and Disha. And it's just that I'm really divided between speaking in Hindi and English, but you can speak in both, like I do. English, that does take some time also. But I'll see. Yeah. So one of the key things that struck me while I was hearing Disha was that when we talk about say the actual livelihoods, or the alternative livelihoods, right? And then it links back to what Anubhav was saying. We at this point need an alternative livelihood because the same extractive industries have destroyed the actual livelihoods, right? The same people who were carrying out sustainable activities, which they have been doing for generations. It could be anything. It could be foraging. It could be their very local hunting, or farming. And farming is not your green revolution kind of farming. It involves millets. It involves very local pulses, and varieties of rice, and so on and so forth. I mean, until 4-5 years ago, I did not know that India has thousands of varieties of rice. Yeah. And a lot of them are being killed. So while at this point we are trying to look at alternatives, we really need to keep in mind that these same industries are the reason why we need to do that, because the actual livelihoods have been killed, right from extracting, say, coal, to iron ore, to burning coal, and so on and so forth. And the same goes for fishing and shipping, right? The local artisanal fisher folk, as well as other allied coastal activities, have now been in a way murdered by the same industry. And when we talk about alternatives of energy, it reminds me of how a particular company has both thermal power plants and green energy,
एंड जिसको हिंदी में हम सब देखते थे शक्तिमान करके एक आता था, राइट? तो गंगाधर ही शक्तिमान है, ये वही वाला सीन है. The same company that is burning coal is now into energy. And why can't why did not the country say, 7 years ago or 10 years ago or 15 years ago, try to create decentralized solar or decentralized wind farms? Basically which basically ensures that people who own the land, or people who are having these plants, decentralized small tiny plants on their land and around them, they get the remuneration for that. And on the other hand, we don't do like large scale solar or wind, which environmentalists today are opposing, because in some places they are spoiling grasslands. And in the environmental narrative, to a very large extent, mountains and glaciers and polar bears and forests are the only things that need to be saved. But we really need to understand that grasslands are also very important, right? And similarly, we are seeing deserts being affected by the same. And we do know that there are cases in the court of how the Great Indian Bustard is being killed left and right because of the same quote unquote green sources of energy. So it's just that while we say that we need to phase down immediately, ASAP, and so on and so forth, we do realize that the government is still extending the deadlines, and the government is still allowing the polluters to pollute. I think in 2015 the Supreme Court had said that, okay, I mean, we do understand that you need to burn it right now, but at least avoid pollution as much as you can. But what happens there is, as soon as they do that, the costs rise, right? And then the profits go down. And clearly the lives of people are way less important to them. I mean, why should they care, right? They don't even pay for the healthcare of their own labor, and so on and so forth. There are ways of working around these things. So that's been happening. But I also obviously agree that the global south has been affected way too much because of these countries. And I think there's a new term for the global south. Disha, what's it? MAPA, what's the full form? Please tell me about, I mean, tell us, all of us about it. But yeah. Oh, now. Yeah, right now. MAPA is most affected people in areas, because we realize that a lot of focus, even internationally, has been on a very whitewashed version of environmentalism and people in the global north, no matter what. And we wanted to ensure that those voices are being focused on the most affected people and areas. We started out as this being a campaign for only people in the global south, and then we realized there are Black people and indigenous people, people of color in even global north countries that experience a lot of firstly racism, and also just huge amounts of oppression, even environmentally, and they don't get a space for it. And that's essentially why MAPA is most affected people in areas. A center thing that we started off with, and today it works on ensuring that we not only pass the stage to people who are most impacted, but also pass structures of power that exist even if we don't want to within the climate movement, so that there is some sort of destructuring and also changing of conversations by people who are to people who are on the front line of the climate crisis. Yeah. Thanks for that, Disha. Just that, when we talk about the most affected people in areas, it's very important to realize, yes, of course, these areas immediately cannot go off, say fossil fuels, because they have been made to function in this way for the past. It differs, the timeline differs. Some places it's 60 years, some places it's 70 years, 20, 10, whatever. But that does not mean we continue to keep walking in that direction. Right. So what the government does in say a COP or in Paris and all these fancy places is that they go and say, see, we are not going to do anything. Okay, we will just be like this because you are bad. And I mean, that's the language they use, and it's very annoying and very difficult for young people, especially from the marginalized areas and communities, to see them do that, because we do realize that
every day they do this, they walk the same path that we had taken during industrialization, is just going to make our lives more miserable. And to be very frank, some of us also feel, yeah, you are going to leave this world in say 20-30 years. Please let us live our lives, you know. So yeah, I'll just want to take a pause at that. Yeah. So you know, like, what would you say to the urban youth? You know, I don't know. I mean, I feel like there's still this talk about, oh, but India needs to develop. And for that, India needs to do what it's doing. And there seems to be some support. I mean, there is concern. Of course, you live in a place like Delhi, every winter, there is the talk about air pollution, about crop burning, and all that. People are impacted. You can clearly see that. And yet there is that discourse, right? That this becomes a development issue. India needs to develop. India needs to compete with China, become what China is. What do you say to people who think that way? First, like, if both of you or, you know, whatever one of you could speak, since you come from the urban area, and then we'll hear from Anubhav. उनको कैसा लगता है जब ऐसा बोलते हैं लोग, है ना, कि हम तो डेवलपमेंट रोक रहे हैं, इंडिया को तो जाना है आगे, you know, whatever, China से compete करना है. Yeah, already they think India is where China is. What do you say to people? At least at Let India Breathe and you know some collectives around us, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि क्या साफ हवा डेवलपमेंट नहीं है ना, क्या साफ खाना डेवलपमेंट नहीं, क्या आपके खाने में माइक्रोप्लास्टिक आना, क्या ये डेवलपमेंट है ना, क्या आपको यही चाहिए, क्या आपको जैसे अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन से जो पंजाब को जो असर पड़ा है, जो बुरा असर पड़ा है, हम उसकी बात करें तो एक कैंसर ट्रेन जिसको कहते हैं वो पंजाब को काटती है. वो क्यों है? क्योंकि केमिकल्स यूज किए गए थे जस्ट टू यू नो आई मीन देयर इज अ डिबेट कि उस टाइम पे इट वाज इम्पोर्टेंट, ओके मे बी, बट डिड वी क्या हमें उसको अब तक कंटिन्यू करना जरूरी था? आज के तारीख पर हम देखेंगे जो मतलब एक बहुत मैंने ये नोटिस किया, पंजाबी जो पुराने गाने होते थे, एंड आई एम श्योर दिस गोज अक्रॉस यू नो डिफरेंट फोक सॉन्ग्स एंड प्लेसेस. बाजरे दा सिट्टा करके एक गाना है जो आजकल भी लोग यू नो जानते हैं, बट आज की तारीख में कितना बाजरा पंजाब में है ना. तो ये एक बात है जो क्या हमारी पुरानी चीजों को जो सस्टेनेबल थी उनको गिराकर कुछ ऐसी चीजें आगे लाना जो हमें ही लोकली भी और पूरे विश्व को भी जो बर्बाद करनी है, क्या ये डेवलपमेंट है? तो हम बस प्रयास करते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू, आई रियली डोंट बिलीव इन द डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट, बिकॉज फॉर मी देयर इज नो इकोनॉमी विदाउट इकोलॉजी, है ना. तो मेरा ये बस एक हम प्रयास करते हैं, एंड ये ऐसा नहीं है कि मुझे रैंडमली आया, मतलब ऑल्दो आई डिड study in Bombay, and I do live a little away from Bombay, a little north of Bombay, and I do consider myself as suburban, if not you know anything else. But उसके बावजूद पिछले कुछ सालों में बहुत सारे साथियों के साथ बात करके और उनकी स्टोरीज जानकर हमें ये और एहसास हुआ ऑब्वियसली. तो ऐसा नहीं है कि रात मतलब हमेशा से पता था कि यार यही डेवलपमेंट की डेफिनेशन है. मेरी में डेवलपमेंट की डेफिनेशन 6-7 साल पहले यही थी, है ना. बट धीरे धीरे हमें ये बातें पता चली, क्योंकि अगर मेरे एरिया का भी एग्जांपल ले तो कोई तो एक फ्लाईओवर हाईवे टाइप की एक चीज है जो कई सालों से अटकी हुई है. तो 10 साल पहले मुझे भी लगता था कि यार ये तो मतलब गलत बात है, क्रीक में कंक्रीट भर दो और कर दो, सिंपल सा तो काम है. बट आज जब मुझे उस क्रीक का महत्व पता चला है और वो क्रीक किस तरीके से हम सबको ही डिजास्टर्स के खिलाफ बचाता है, डिजास्टर से बचाता है, वो जो एक हमारी नेचुरल रिसोर्स है, इस तरीके से नॉट इन द अदर वे इसको एक्सट्रैक्ट करो और उसको नेचुरल करो. तो हमारा बस प्रयास ये है कि इस डिबेट में जाना ही नहीं, बल्कि इस डिबेट के बारे में पता करना कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, एंड जो बाकी साथी आई एम श्योर और अच्छे से. So Disha, can you talk a little bit about you know,
your work in this or Fridays for Future, like what is the objective and what is the work you've done? And if others wanted to kind of become part of it, how can they, what exactly would they be doing? And, how others can join? Yeah. I think before that, just adding on to what Yash said, it's the fact that development is associated with speed, right? Like every time they were like, every time we talk about development, it's always about, oh, how fast can you reach from location A to location B? How fast is this delivery going to be? Now we have those 10-minute deliveries. If I wanted 10-minute delivery, I'll walk to the store. Yeah. It's about the fact that development is often associated with speed. And I think that's one thing that we're trying to change, that it's not, speed doesn't necessarily mean better. It doesn't mean advancement or progress. Speed often is accompanied by great environmental destruction and violation to human rights as well. And that's a conversation we're trying to change, even on a local as well as national level with FFF. And we're just going to start onboarding forms. I think this week we're going to just put them out. Oh, Anubhav's here, by the way. So that's what, that you can just go to our Instagram, fridaysforfuture.india, and you can join us. Just saying that Anubhav had to drop and won't be able to join, unfortunately. So Yash, can you talk a little bit about what your, it's not a non-profit, it's a collective, as you corrected me. Can you talk about like what exactly your organization has been doing? And it seems like your organization does try to be inclusive of, including non-urban areas. What exactly do you guys do? Sure. So, primarily, as I mentioned at the start, what we try to do is just ensure that we try to read up as much as possible, and we talk to people who read, say, policy documents, amendments, notifications, laws, and so on, and even cases and so on and so forth. है तो जैसे ट्रांजिशन करना तो जरूरी है आगे की जनरेशन्स के लिए, जैसे कि अभी बात चर्चा हो रही थी, कोल से हटना तो पड़ेगा, लेकिन जरूरी ये है कि जिनको आजीविका इस पे डिपेंड करती है उनका क्या कर रहे हैं हम, राइट? उनके लिए कुछ और दे रहे हैं उनको कि नहीं? तो इस पे आप क्या कहते हैं और किस तरह से, मतलब गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो एक बात है, लेकिन कम से कम लोगों को किस तरह से ये बात ऐसी हो कि ये मुद्दा जो है इतना जरूरी हो कि मान लीजिए इलेक्शन कैंपेन्स में ये इसकी कोई अहमियत हो, क्योंकि अभी तो बिल्कुल कोई अहमियत नहीं है इन चीज़ों की, थी तो कभी इलेक्शन में कहीं भी इसके ऊपर बात नहीं होती है। लेकिन जबकि सबको, मैं दिल्ली का ही सोचती हूँ, कभी भी पोल्यूशन की बात सब करते हैं जैसे ही विंटर आती है, लेकिन इलेक्शन में तो कहीं भी ये कोई मुद्दा नहीं रहता है। तो ये कैसे ये बदलाव आ सकता है कि लोग इतना, जैसे कुछ कंट्रीज में दिखता है ज़्यादा से, यूरोप में इस पे ज़्यादा अहमियत है क्योंकि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इस मूवमेंट में। तो आपकी राय में क्या है जो समझा सकते हैं लोगों को, और क्या करना चाहिए ये ट्रांजिशन के लिए? आपने जो मुद्दा उठाया है कि अभी भी मतलब एक तो विकास भी करनी है और विकास देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, सब देशों की तरह अपने देशों को भी बढ़ाना है। तो उस तरीके से हमको जो संसाधनों की जरूरत पड़ रही है इस देश को, और संसाधन सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को डिस्ट्रॉय करके ही हम संसाधन ले पा रहे हैं, और उसी से हम देश को आगे बढ़ाने की बात को, और उसी एक विचारधारा, वही एक आइडियोलॉजी को लेके हम चल रहे हैं आज की स्थिति में। तो मतलब थोड़ा देश को भी देखा जाए तो देश इतना डाइवर्स है कि जियोग्राफिकल जो
जो विविधता है वो अलग अलग तरीके के हैं। कई पहाड़ हैं, कई आदिवासी को क्षेत्र है, कई जंगल है, कई प्लेन है, कहीं रेगिस्तान है, तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे विविधता है। तो थोड़ा हमारे देश के हिसाब से जो मेरा हमेशा एक सोच होता है कि हमारे देश में भी जो विकास का जो डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है उसको भी एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है कि सही मायने में क्या विकास है, किस चीज को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में और बाकी यूएस के कई सारे कंट्रियों के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट है। वहाँ के लोग एक तरह का ज्यादातर वहाँ का वेदर और कई सारे चीज वहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक तरह का धर्म भी है। लेकिन वही हमारे देश में वहाँ पे एक मतलब एक सही हो जाता है कि वो सबका विचारधारा एक तरीके का है, हर एक चीज का टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और इस तरीके का जो चीजें। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि शहरों में जो शिक्षा के स्तर काफी आगे, गांव में शिक्षा के स्तर अभी भी नगण्य, लोग ट्रेडिशनली चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें से कुछ अच्छे भी चीजें हैं, कुछ उसमें से बुरे भी चीजें। लेकिन इस पूरे चीजों में से हम जो डेवलपमेंट का जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको कहीं ना कहीं हमको निकाल के लाना पड़ेगा। जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल में भी कि महिलाओं की जहाँ पे पार्टिसिपेशन हो, और पर्यावरण के मुद्दे में भी आप अगर देखें तो महिलाओं की बिल्कुल भी एक जगह नहीं बन पाई है जिसपे वो बोल सके कि हमारे बच्चों को समस्या होने वाली है, या फिर हम कहीं से अगर अपने आजीविका, हमारे खाने पीने के लिए जो भी चीज चाहिए वो हम ला रहे हैं तो वो कैसे टिके होने चाहिए। तो इस तरीके की बात जो है महिलाओं के बीच में भी ये बात अभी भी स्थापित नहीं हो पाई है। लेकिन मेरा तो एक ही रिकमेंडेशन है कि डेफिनेशन को बदलना और ये एक डेफिनेशन लाना जिसमें एक आदिवासी क्षेत्र में भी अगर लोग अच्छे से जिंदगी जी पा रहे हैं बिना कोई बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट के, मतलब जो आजकल का सो कॉल जो डेवलपमेंट के भाषा है उस हिसाब से उसके भी कमी से अगर जी पा रहे हैं तो वो भी एक डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन हो सकता है। लोग अगर अपने फॉरेस्ट रिसोर्स, अपने जो बाउंड्री है, अपने विलेज की बाउंड्री के अगर फॉरेस्ट रिसोर्स के अगर वो बचा पा रहे हैं, उसको कंजर्व कर पा रहे हैं, उसको मैनेज कर पा रहे हैं, और उससे वो सही अगर एयर मतलब सही से वो अपना हवा ले पा रहे हैं, पानी ले पा रहे हैं, अपना जिंदगी ले पा रहे हैं, अपना आजीविका ठीक कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक सही डेफिनेशन है डेवलपमेंट का। दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो आज हमारे देश में अगर हम कोल का ही एक ले लेते हैं कि कोयले की खदान इतने तेजी से भी हो रही है, और भी कई सारे खदानें स्वीकृत हो रही है, लगातार जंगलों को हटाने की बात और खनन की बात हर एक जगह चल रही है। लेकिन एग्जैक्टली हमको ये साइंटिफिक तरीके से ये भी देखने की जरूरत है कि आज हमारे देश में कोयले की सही में क्या जरूरत है या नहीं है। क्योंकि कई सारे रिसर्च और कई सारे रिपोर्ट में पढ़ने को मिलते हैं कि हमारे देश में जितना कोयले की खपत है उतना उत्पादन हो रही है, हमको नई कोल ब्लॉक की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो एक्स्ट्रा प्रो और इस तरीके के डेवलपमेंट को के कॉन्सेप्ट में खननों को बढ़ाना तभी विकास होगा। इस तरीके की जो चीजें हैं इसको भी कहीं ना कहीं हमारे विचार में लाना, और इस तरीके की जो एक्टिविटीज है, जो कि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए जो सरकारें अलग अलग तरीके से कानून में लचीलापन लाना, बाईपास देना, और उनके साथ जो हाथ मिलाने का बात है उस पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ आदिवासी और जो रूरल इंडिया के लोग हैं उनको नहीं, साथ में शहरों के भी लोग को इस बात को भी रेस करना पड़ेगा। तब ये जाके एक डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो भी सही हो पाएगा, और हम सब समझ पाएंगे कि किस तरीके से पर्यावरण को भी ठीक कर सके, जितने रिसोर्स और जितने संसाधन है उसके सतत उपयोग से। No, I think that was very, very powerful by what Anubhav said, and very essential also. Yeah, so in some of your campaigns, Disha, like, because I know, I mean, a lot of youth is involved in this movement, and you're one of them. How do you change the discourse? Like, what more needs to be done? And how can this become such an important issue that even politicians take notice? Because, I mean, a lot of it can't be done without policies, right? You can, at a small level, think, yeah, let's have a solar farm or something like that.
but that's not really like, going to solve the problem as per se. And to some of the previous discussion, how even like clean energy is kind of, it's the same companies who are getting into that, and how sincere are they about that? Like you said, there are a lot of options for India because, of the sources that we have, like solar, there's a lot of water, three sides surrounded by water. Wind also in, I think, some states, or wind is also being considered as an option, I think in Tamil Nadu, right? So, and yet why? There are some countries, Germany, for example, I was traveling in Germany, and I found it very striking that they were like, highways, as you are driving, you just see solar like everywhere. And one would think that India, as a country with a lot of like summer with, solar energy should be it's still expensive maybe, but why aren't we moving more towards that? What are your thoughts on that? And like, how do you, what more can be done to change the discourse? Okay, yeah, I mean, I think in general, there's just a lot of amount of work to be done in the environmental movement in various, shaping various narratives. But I think most of FF work is also very focused on policy. So I think we've definitely gotten the attention, maybe not in the best way of the government, but also because I think in terms of specifically energy, it's true that, the same people who are in fossil fuels right now are the ones establishing green energy. And I think that is largely because, sorry, 1 second. That is largely because they're the ones who have the money to do it. And to them, it's not about, it's not an either or situation. It's the fact that it's an and situation where they can invest in wherever the money flows, right? It's not like they actually care about green energy. So how do we find that the organizations that don't have affiliations to fossil fuels aren't focused on this for the profits, but actually for the benefit of the planet is something we need to consider. It is a hard question because there aren't many of those to back them up. And the existing ones are just doing it for monetary gains of themselves. And if something else is profitable, no matter how violent that can be, they'll go after that. So I think that is also an important conversation to be had. And I think personally, on what more can be done, I think just this year, I want to see way more coalitions. I want more people coming together to work on these issues, despite of, there are different ideas on how to work on them, because ultimately, none of us can do this alone. FF is not going to be able to lead climate victory or attain climate justice alone. LIB is not going to be able to do that. And it is important for us to join hands with each other and build movements across all of our differences, because we need each other to essentially get through this. It's not going to be possible if we don't work alongside each other, because it's simply not possible for one movement, even let's say FFF, to cover every issue that comes under environmental, because it's so vast. A lot of the time, sometimes we don't even know what's happening because it's so vast, and we don't want to dilute everything we're doing and focus on absolutely everything, because that's just, we are not giving one thing full attention. So it's literally not possible for any of us to do this alone. So I think we need more coalitions, we need more community building to get through this together. Just before we end it,
Disha, like say if FFEC wanted to become part of this movement, what is the what would your suggestion be? I don't know if there's some local action we could get involved with. There is something else to just support the movement. What is your suggestion? Definitely, I think we need everyone to be a part of it. I think more, I'm not sure if you guys are based in a particular region, but if you aren't, FF India always needs support digitally, because we work on a lot of policy-based things, because there's no, in India, there's been so many environmental policies that have been diluted, and that is something we want to work on. And spreading that message is something that we will always want to collaborate with others for. So I'll definitely text you about it, Yasmin. Yeah, I think that will be good, and we'll see how. So where we're based so far, all our work has been in Delhi, primarily in Trilokpuri, which is in East Delhi. It's a slum. There's a huge migrant community over there. People from many different parts of India who live there. But that's not to say that we cannot work, somewhere else also. This has just been our focus. And the way it's very organic, the way we've been working based on the needs of the community. And we try to keep a holistic approach. So it's not like we're specifically working on one issue. We started with education, but now we are also into livelihoods. We are also working a bit with women on health and nutrition. And, something that is of interest to me is there is this huge jhuggi, as it's called, or the unauthorized part of Trilokpuri. One of the jhuggi is called Ambedkar Camp, which is, it's got more than 700 households. They don't really have any source of water or energy because it's unauthorized. So they're just getting it, kahin se, they take it from somewhere. And I often think, that it may be a small, community where we could try some alternate source of energy like solar or for water. I don't know. It's just some thought, in my mind. So this is just to let you know that so far we've been working mostly in this area. We had briefly started working in Mewat, which is in Rajasthan, right, where again there are so many opportunities to work on some of these energy solutions or water, like some of traditional methods which they used to use. You can see these reservoirs, these what they call bawlis, wells, which are defunct now. Because I think that was one of the sad impacts of colonialism, that our traditional ways got lost. And so, there are these long-term ideas that FFEC would like to work on, but, you need money, funding for such ambitious projects. But nevertheless, I do want to see if there are, even some small actions that FFEC could kind of be able to join in, or just even webinars. We could have more webinars on more specific topics, or issues, how to be more inclusive, and just keep doing this so that we build more awareness and have more people join. So that's kind of what I'm thinking. And with that, and hopefully we'll see you in some other webinar, in a few months. Thank you again.